3 రోజుల భారత పర్యటనకు వచ్చిన జపాన్ ప్రధాని సనాయ్ తకాయిచికి రాష్ట్రపతి భవన్లో త్రివిధ దళాలు గౌరవ వందనం సమర్పించాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. గౌరవ వందనం అనంతరం ప్రధాని మోదీ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ సహా ఇతర కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రులను తకాయిచికి పరిచయం చేశారు. 16వ జపాన్ భారత్ వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సులో భాగంగా హైదరాబాద్ హౌస్లో ఇరువురు నేతలు ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, రక్షణ సహా ఇతర కీలక రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకార బలోపేతంపై చర్చలు జరగనున్నాయని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी. इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी. ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी एक महत्वपूर्ण पहल की है. साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा. भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे. फ्रेंड्स, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है. इससे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे. फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की बड़ी ताकत हमारी पीपल टू पीपल टाइज है. हम टैलेंट मोबिलिटी, स्किलिंग और टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अवसर भी बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और स्टार्टअप सहयोग भी सुदृढ़ कर रहे हैं. हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं. इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे. योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है. सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी. एक सशक्त और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें. मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अरिगतो गोजाइमास. Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Takaichi Sanai, Prime Minister of Japan, to give her remarks to the media. 皆様、こんにちは。 Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and develop this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strength to become stronger and more prosperous together. In the midst of international affairs in disarray, the establishment of such intercomplementary cooperative relationship has become ever more important. From such perspective, as Prime Minister Modi and I engaged in discussions over diverse issues, we again were reminded of the many goals we share.
And we confirmed to place the following 3 points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative, for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with FOIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. Expansion of maritime security cooperation is especially important for regional peace and stability. Taking the opportunity of our visit, a destroyer of Japan's Maritime Self-Defense Force and an India Navy vessel are planning to engage in joint exercise. We will enhance